start with the MFA first. MFA is the security feature available in Azure Active Directory. Okay, let me share my screen. Okay, so the last topic which we discussed was achieving single sign-on. So when we think of an organization, okay, so in an organization you will have some solutions in place depending upon your requirement. Okay, so if you're an IT administrator, you're responsible for deploying solutions to the IT environment so that you provide feasibility as well as security to your employees and your IT infrastructure. Okay, so feasibility in the sense you have to ensure that your employees are utilizing the benefits of the cloud technology, and they are the authentication and authorization is also secured. First of all, you have to think about the security aspect, as well as you have to think about the feasibility, how which feature you can deploy so that you can provide more feasibility to your employees. Okay, so single sign-on is one of the feature wherein you are providing more feasibility to the employees by providing them the benefit of getting SSO, single sign-on. So what they have to do, they don't have to enter their credentials every time. You are providing a feasibility wherein they can just enter the credentials once and they get access to all the applications of the company with a single login. Okay, so this is one of the solution a company can think of to deploy to achieve single sign-on. Apart from this, when you are also responsible to increase the security, you are also responsible to ensure that no attacker is. There are no attacks on the user accounts, and you have to ensure that there is no leakage of security. Okay, so there is no leakage of any data as well. Right, any unnecessary accesses are avoided. Right, similar to privileged identity management, PIM, which we discussed. Like, so you don't need to. You have to ensure that the role is assigned to the correct person at the correct point of time, and it is revoked whenever it is not required. Right, privileged identity management and RBAC. So all these decisions an IT administrator has to take in an organization. Similarly, when we think about security, you have to ensure that there is extra security on critical accounts. And there can be some accounts which are very much critical, right? Like, let's say if you are a global administrator in your company. Okay, so being a global administrator is a very responsible job, right? And let's say if your account is itself hacked, okay, someone is able to hack your account and gain access to your global administrator account, then they can do anything in your company, right? If your global Yes. admin account is hacked, anything can be done in the company. They can make changes to anything and everything in the Azure portal. They have access to everything. So such accounts has to be much secure, right? Those critical accounts has to have greater security in place. You have to ensure that there are some greater security solutions deployed for these accounts so that they are protected. Okay, on that same thought, we have a solution that is MFA. This is a basic solution, a simple solution which every company makes use of. Okay, whichever company is making use of Azure Active Directory, you will definitely see that they are utilizing Azure MFA somewhere. At least a user account is enabled with MFA. So whenever they think of security, they have to have MFA in place. Multi-factor authentication should be configured for critical accounts to protect them. Okay, so we'll take a look what is this MFA and what does it do. So multi-factor authentication is something which will increase your verification methods. Okay, so at the time of authentication, what will happen? What is authentication? Can someone tell me? Authentication is nothing but verifying the user.
via verifying the I user identity. Yeah, yeah with the help of the credentials which he enters, right? The username and password. yes So yes password is a way of verification, right? Username can be visible to anyone. I know that your username is like Ibrahim at the rate Microsoft.com. Okay, this can be your username. I can easily guess that. But password is something which is used to verify your y- identity, right? You have to provide your username yes and password. So password is one method. Similar to that, so this is the basic verification which happens everywhere, right? Primary yes verification, we would say. The primary method is password every time. Apart from this primary authentication, there can be a secondary authentication as well. Secondary verification, we can say. Okay. So the yes secondary verification will be called as MFA, MFA multi-factor authentication or authentication. two-step verification. There are n number of Yes ways we can call it out: secondary authentication, or second step verification, or two-step verification, or multi-step or multi-factor. Okay, password is one yes factor. Another factor can be like your OTP on your mobile number, or a text message, or let's say a phone call where you have to answer and press some keys to accept, right? So these can be some additional verification methods apart from password, which you can enable on your user accounts, so that whenever these user accounts are logging in to any application, they will be prompted with additional verification request. Apart from password, they have to enter another verification, like they have to answer a phone call, or they have to receive a OTP on their phone number which they have to enter, or let's say yes a thumbprint. Okay, a thumbprint can also be a verification. Like on your mobile phones, you have your fingerprint locks, right, or your pattern lock. So all these are some alternatives of a password, right? Instead of a password, you are using some alternate methods of verification, like a pattern. On your mobile phone you have pattern locks, right? So you will have to draw a pattern to unlock your phone, or you have to present your fingerprint, your thumb, or there is also face recognition, if you guys are aware, right? So face recognition is also a method to unlock something or log in somewhere, right? So these are yes additional ways of verification. Apart from password, these all are additional factors, multi-factor authentication. So all these are factors, multiple factors: face recognition, thumbprint, pattern, or an OTP, or a code, a PIN code, okay, or a phone call, answering a phone call, or let's say you get a push notification which we have to approve or deny. Okay, so all these kind of verifications are multiple different verification methods to identify your identity, to verify your identity. Okay, so all these will come under multi-factor authentication. So now let's take a look how we can enable this feature in our Azure Active Directory, and what are the different ways to enable this. Okay, so we'll go to the users blade. Let's say I want to enable this security on a particular user account. Okay, there is a user account. Sorry, there is a user account which is critical. Let's say Ibrahim, I have an account called Ibrahim, which is a very critical account, and I cannot take a risk on this account. Ibrahim at the rate Razi.store. So this account is a very critical account, and I cannot take any risk on this account. I have to enable extra security on this account. Okay. So how do I do that? So under this users blade, you have something called per user MFA. There is a hyperlink over here. It is called per user MFA. It's visible, right? yes Yeah. So when you click on this link, it will take you to a new tab, and it will take you to the MFA page where you can configure the MFA settings. Okay, so this is a new tab which opened when I clicked on this per user MFA. I was brought to this page wherein I can see all my users listed out over here. Okay, all my users are listed out. So what I need to do, I just need to search for my user account which I want to enable the security.
So I will search with Ibrahim. Okay, so I got this account. I have to check this box and just have to enable him with MFA, enable multi-factor authentication. Okay, so Yes. it is giving me some information over here. If your user do not regularly sign in through the browser, you can send them to this link to register for MFA. Okay, so there is a link to register for MFA. So now what is Okay. this? Why do we need to register? Why does a user needs to register for MFA? So any Uh, idea? I think because of the sync. As soon as the user log in, the account will be synced to this to Azure, and then the multi-factor will apply on that account. Mm, so the account is synced already. That's the reason this account is visible over here. So synchronization is Okay. happening from on-prem to Azure. This account is already synchronized and it's available over here. Okay. Now, when I am enabling, I'm the administrator, okay, in your company. Okay. I'm enabling MFA on your account, on the Ibrahim account. So now when I enable MFA, the next time you will log in, it will ask you for additional verification, right? Yeah. So that additional Because verification can be your an OTP on your phone, okay, or a phone call on your phone, or let's say anything, your fingerprint, or anything can be the MFA method. So these methods have to be pre-registered first of all, right? Your phone number has to be provided. So where should I call you? The next time you log yeah, in, where should I call you? I should have the phone number with me, right? Azure should have the phone number with it. So Azure Active Directory will need your phone number to call you whenever you're logging in the next time. So that, or send you an OTP on that phone number. So your phone number has to be registered. Or let's say when you buy a new phone, okay, let's say you have purchased a new iPhone and you want to set up the fingerprint lock, okay, on your phone. yeah, So first time when you have to enable the fingerprint lock, or let's say fingerprint is nothing but a additional verification method which you are enabling, right? So you have to register your fingerprint first at the first time, right? You have to go to that fingerprint blade in your settings, and then give your fingerprints over there. All your fingers has to be registered at the first time, so that the next time when you try to unlock your phone, it will recognize your finger, right? yes, So in order to recognize, at the first time it has to be registered. The method has to be registered. yes, Okay, so that is what the registration is. So when you enable this, it is asking you to provide this URL to the user. It's not mandatory. You can directly enable it. So when you enable it, the next time the user logs in, he will be prompted to register. Okay. First time, whenever the next time he is logging in after the MFA is getting enabled, he will be prompted to register. Okay. I'll show you the difference. Let me open a private browser. I will go to the portal.azure.com. I think it will log me in directly. Yes, it does. I'll have to log out. Give me a second. All right, so I will try to log in with the Ibrahim account.
Okay, it will just log me in directly without asking for any additional verifications because MFA is not yet enabled on my account. Yes. Okay, now I will try to sign out and I will enable MFA first of all, and then I will log in with this account. Close this browser. Now I will go to this enable blade and I will enable MFA on this account. Multi-factor is now enabled for the selected accounts. Close. Let's give a try now. So when a user is enabled with MFA and now Ibrahim is trying to log in after the global admin has enabled him with MFA, see what's the difference. Password. Here is the difference. More Yes. information required. Your organization needs more information to keep your account secure. Okay. So it's asking for more information. Apart from password, it is asking for more information. When you click next, it will take you to the same URL which this was presenting. Okay. When I was trying to enable it, or let's say any account. So when I try to enable it, it was giving AK me dot this URL aka.ms/mfa setup. Right. So if I am saying next, it will take me to the same page, MFA registration page, MFA setup or MFS registration page, wherein it will it will allow me to register my phone number details and everything, which I will be utilizing in the future to complete my MFA requirement. Okay. Yes. All right. So there are different ways of registering. Like, so you can have a phone number to receive an OTP or something, or you can also have a application installed in your mobile, Microsoft Authenticator app. This is available in App Store and Play Store. So you can install this application, and this application you can utilize to approve or deny the request. So you have to go inside the application whenever you're logging in and provide a code over there or approve it or deny the request. So that is also a kind of MFA. Let's say I don't want to use this authenticator app. I want to go with my phone number. So I have an option. I want to set up a different method. So I can choose the method that is phone. Instead of the application authenticator app, I can go with the phone option. Confirm. Okay. Now I have to provide the phone number. Let me select the country code. Country code is India. And then my phone number. Okay. So text me a code. Phone call is not available for free tenants. Okay. So I'm using a trial tenant, right? I'm using a trial license. This is not a purchased license. I don't have a purchased license on my tenant. It's a free trial I'm using. So for free trial, phone call option is not available. Only text message is there. Only Yeah. text message option is there. Okay. So I will say next. It will send me an OTP first at the first time to validate that this phone number is correct or not. Okay. I just received a message. Perfect. SMS verified. Your phone has was registered successfully. Done. Now it will take me to the actual application which I was trying to log in, that is portal.azure.com. Okay. Understood the registration part, Ibrahim? yes. Yes. So this happens only once.
Okay, when the account is enabled with MFA, and the next time whenever the user is trying to log in, it will allow him to register himself for MFA for the first time, and the next time whenever he logs in, after that he will directly receive a OTP on the registered phone number. Yes. Understood the difference? So the first Yeah. time he has to register. The next time whenever he is logging in, he will directly get an OTP on that phone number which he has registered. Now you can see the difference. So the MFA is still enabled. I'm done with the registration part. Now the second time when I'm logging in, it will ask me for password, and after password, I will directly get the OTP on my phone number. Verify your identity, and it has an option for me to select text message on this number. When I just say verify the identity, I will receive a OTP. I just have to enter this OTP. Okay, 319248. And there is an interesting option. Don't ask again for 90 days. So I can have this option wherein I can skip the MFA requirement for next 90 days. Okay, so your administrator can allow you to utilize this option. I don't want this to happen. I want MFA to be prompted every time on this device. So I will uncheck this option and I will just say verify. That's it. वो Logged रिफ्रेश in. टोकन के जैसा था क्या वो? हाँ, काइंड ऑफ रिफ्रेश टोकन बोल सकते हैं आप, या फिर इट्स MFA टोकन. MFA हैज अ डिफरेंट टोकन. MFA जब भी कंप्लीट करते हैं आप, MFA का एक अलग से टोकन जनरेट होता है, MFA टोकन. So that token will get stored on the device. वो भी सेटिंग है यहाँ पे. तो यहाँ पे जहाँ पे अपन MFA enable करते हैं on the users, you have a service setting blade. Okay, if you switch to this blade, so on the users blade you will see all the users. Okay, if you switch to the service setting blade, being an administrator, you can configure this setting for the users, whether you want to have them remember their MFA for 90 days or not. So in this setting, you will have this option on the bottom. Allow users to remember MFA on devices they trust between 1 to 365 days. ठीक है, तो आप अगर ये ऑप्शन एनेबल रखे तो वो लॉगिन के टाइम पे वो ऑप्शन आता नीचे, रिमेंबर फॉर 90 डेज, डोंट आस्क फॉर 90 डेज वाला. ठीक है, अगर मैं ये अनचेक करके सेव कर दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं लॉगिन करूंगा तो वो ऑप्शन नहीं दिखेगा मेरे को. लेट्स गिव अ ट्राई. वो 90 डेज एडिट कर सकते हैं अपन, मैक्सिमम जी 90 एडिट डेज. कर सकते हैं, मैक्सिमम 365 डेज है. ओके. मैक्सिमम 365 डेज है, 1 डे टू 365 डेज कर सकते हैं आप. बाय डिफॉल्ट वो 90 डेज रहता. ठीक है, लेट्स गिव अ ट्राई अगेन एंड सी द डिफरेंस. This time you will not see that option. जी आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरे को तो नहीं आ रही. इब्राहिम, आ नहीं रही आ रही आवाज? नहीं नहीं आ रही मेरे को भी. आई कैन हियर योर साउंड.
हेलो। अभी आ हाँ रही। जी, आ मेरी रही है। लैपटॉप की आ गई, एक सेकंड। अभी अभी आ रही है आपकी भी। अभी भी आ आ रही? रही। अच्छा, आ रही आवाज आ रही। ठीक है, ठीक। आप क्या बोले? सुने नहीं, लास्ट टाइम का मतलब आप चेंजेस कर रहे थे शायद। हाँ, चेंजेस कर रहा था मैं, लेकिन अभी भी उस टाइम भी वो ऑप्शन दिखाया लॉगिन के टाइम पे, जो नहीं दिखना चाहिए था। 90 डेज का ऑप्शन ऑप्शन। दिखा। हाँ, 90 डेज वाला ऑप्शन फिर से दिखा। एडमिनिस्ट्रेटर के साइड से अपन क्या करें, ये ऑप्शन निकाल दिए। बीइंग एन डिजेबल कर एडमिनिस्ट्रेटर, दिया। आई हैव रिमूव दिस ऑप्शन। तो अभी ये ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, जी apart हाँ। from this, there is also one feature over here. You can actually define the methods which your users can utilize for MFA, like text message option, दिखना नहीं दिखना, ये register ये option available रहना users के लिए या नहीं रहना, और ये mobile app वाला authenticator app वाला option रहना या नहीं रहना. So you can define it. ठीक है, कौन से options रहना, कौन से options नहीं रहना. ठीक है, let's take a look once again on this 90 days वाला. चले गए ऑप्शन। फिर नहीं भी नहीं, दिख रहा है, अभी भी है 5919. ठीक है, I'll do one thing. I'll enable this MFA for a different account, क्योंकि ये सेटिंग ये यूजर जब MFA enable किए थे it was allowed, so might be there is a glitch over there. पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे अकाउंट पे enable करेंगे. We have another account that is Like for example, a company have thousands of employees. So mm-hmm. for those employees, if you want to assign this multi-factor authorization, in that case, Mm-hmm. how do we select the multiple users for that? Exactly. So this is a manual way of enabling MFA on each and every user. Definitely, we have a bulk method as well, wherein we can enable MFA on bulk users. जैसे यहाँ पे bulk update option है, ठीक है. Okay, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे bulk update में you can select a file, a CSV file, wherein you will have the name of all the users. ठीक है, okay, यहाँ पे एक सैम्पल फाइल भी है, आपको कैसा बनाना है वो फाइल. यू कैन टेक अ लुक ऑन द सैम्पल फाइल एज वेल. सो यू हैव टू हैव अ CSV मतलब एक एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में आपको सारे यूजर्स के नाम डालना है और वो अपलोड करना है. अपलोड करके डायरेक्टली बल्क अपडेट करना है वो यूजर्स पे, MFA. okay, That is another option. Apart from that, there are other options as well which we will be exploring one by one. okay. Now let me give a try with this new account, that is usma@razi.store. So the next time I'm logging in, it will ask me to register because this is a new account which is not yet registered for MFA. More information required. It will ask me to register the MFA details.
I want to use a different method, that is phone. All right, registration is done. This is KMSI, keep me signed in, yes or no. Okay, now I will try to, the registration is done. The next time I will log in, I will get the MFA prompt directly. Let me get SSO, so I'll go with a fresh browser again. Okay, MFA prompt. Oh, still showing this 90 days option. Definitely it appears to be a glitch with this feature, which I have already disabled, but it is still appearing over here. I'll see if it's an ongoing issue, because ideally this option should not be available anymore, because I haven't enabled this option for the users. I have disabled it over here, right? Under service settings, I have disabled it, but still the users are able to see that option. So it appears to be a glitch with the feature. I'll take a Yeah. look on that. Okay. So apart from these features, there are also some settings available over here. So what you can see is something called trusted IPs. Okay, there is something called trusted IP addresses. What you can do, being an administrator, you can list out some IP addresses over here, a group of IP addresses which you don't want MFA to be prompted. ठीक है, अभी for example Ibrahim, for Ibrahim user account, Ibrahim is a very critical user, he is a global administrator in my company. ठीक है, I have to protect his account. So what I have done, I have enabled MFA for his user account. ठीक है, तो अभी जहां भी इब्राहिम लॉग इन करेंगे, जो भी एप्लीकेशन लॉग इन करेंगे, every time he will be receiving an OTP or a phone call, and he has to complete the verification to get inside in each and every application. ठीक है, if we think about a security concept, security wise अगर अपन सोचेंगे तो ये अच्छा है. ठीक है, it's a very good feature that it is always doing a extra verification whenever granting him the access, so that no other user can, no other attacker or a third person can gain access to his account. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल पासवर्ड अगर मालूम भी हो गया इब्राहिम का, लेकिन भी लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज तो इब्राहिम के फोन नंबर पे जाएगा, right? And Ibrahim will have that phone with him. No one else can gain access to his phone. Okay? So it's an extra verification we are doing. So we have a greater security in place. So if we are thinking about security, it's good. Like Ibrahim is struggling over here, right? जेन्यून जो इब्राहिम जो लॉग इन कर रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही, क्यों? Every time he has to approve or deny and enter the OTP, it's a very it's a very lengthy procedure for him to log into each and every application, right? बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उनको, कुछ एप्लीकेशन जल्दी लॉग इन करना है, पहले पासवर्ड एंटर करो, फिर ओटीपी के लिए वेट करो, ओटीपी आता फोन पे, फिर वो एंटर करो, फिर लॉग इन करो. इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस फॉर हिम एवरी टाइम, ऊपर से बार बार राइट? पासवर्ड भी भूल जाते हैं ना. पासवर्ड भी भूल जाते फिर, अच्छा ऐसा भी है. तो फिर वो प्राइमरी वेरिफिकेशन फेल हो रहा, फिर कभी फोन पे सिग्नल नहीं है, मैसेज नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, आउट ऑफ नेटवर्क है आप,
कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं आया वेरिफिकेशन के लिए, आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चैलेंजेस हो रहे हैं इब्राहिम को, राइट। सो वी हैव टू थिंक अबाउट हिम एज वेल। सिक्योरिटी का तो सोचना है, साथ ही साथ उनकी फिजिबिलिटी भी देखना है, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, we can limit his MFA prompt to certain certain locations, ठीक है। अब समझो इब्राहिम ऑफिस जा रहे, इब्राहिम इज गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस के अंदर उन्हें लैपटॉप में लॉग इन कर रहे, ठीक है। तो ऑफिस इज अ वेरी सिक्योर प्लेस, he is already in a very secure place wherein there is no third person can कोई unknown person तो ऑफिस के अंदर आ नहीं सकता, right, and an unknown person cannot gain access to his account inside the office, right। ऑफिस के अंदर तो सब genuine लोग रहेंगे, I mean very I mean, the people inside your office are genuine persons. They are not any कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई ऑफिस के बाहर का बंदा तो ऑफिस के अंदर आके लॉग इन नहीं कर सकता, राइट। So it's a very secure place. You are going in a very secure network. You are in a very secure place. Secure network में है आप, ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्टेड है, मतलब एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है। सो वहां पे आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। when you are in office you don't need an extra layer of security because you're already in a secured environment, secured network में connected है आप, ठीक है। and you will have a proxy network over there, आपके ऑफिस में एक proxy network रहेगा जहां से कोई external traffic आपको directly आपके लैपटॉप को access नहीं कर सकती, right। आपके ऑफिस के नेटवर्क में एक extra security रहती, definitely। तो ऑफिस में जब भी आप कनेक्टेड है, I can configure, being an administrator I can configure that whenever he is inside the office network MFA should be skipped, MFA नहीं पूछना है, ठीक है। तो what I can do is मेरे ऑफिस के जितने भी आईपी एड्रेसेस है, मेरे ऑफिस के नेटवर्क के जो आईपी एड्रेसेस है, मैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर दूंगा। तो अगर ऑफिस अगर इब्राहिम का लैपटॉप ये ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्टेड है, मतलब वन ऑफ दीज आईपीस विल बी allocated to his लैपटॉप, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करूंगा वही आईपी एड्रेस उनके लैपटॉप को allocated रहेंगे, राइट। तो अगर लॉगिन ये आईपी एड्रेस से आ रहा तो एमएफए नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा, एनी कंफ्यूजन? नो। नो मतलब नहीं आ रहा समझ में, नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है कुछ, समझ में कंफ्यूजन, ठीक। तो ऑफिस के जो आईपी एड्रेसेस है, ऑफिस के नेटवर्क, अब आपके आपका जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, मतलब आपके जो आईटी सपोर्ट वाले रहते हैं ऑफिस के, वो लोग क्या करते हैं, पूरा नेटवर्क डिजाइन करते हैं आपके ऑफिस का। तो वहां पे एक आईपी एड्रेसेस लिस्ट आउट करते हैं। अपन डीएचसीपी पढ़े, डीएचसीपी अपन पढ़े ना, तो डीएचसीपी जी। में क्या होता, अपन एक रेंज डिफाइन कर देते कि अपने ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज कनेक्ट करेंगे उन लोगों को ये आईपी से ये आईपी की रेंज में से एक आईपी अलॉकेट होता, ठीक है। जी। तो डीएचसीपी का जो आईपी आईपी का जो रेंज है, वो रेंज मैं क्या करूंगा, बीइंग अ नेटवर्क एडमिन और आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, आई विल लिस्ट आउट दैट आईपी रेंजेस ओवर हियर, ठीक है। तो ये रेंज से अगर कोई आईपी एड्रेस अगर मेरे एम्प्लॉय को कनेक्टेड है, मेरा एम्प्लॉय अगर ये आईपी एड्रेस से लॉग इन कर रहा, दैट मीन्स दैट ही इज इनसाइड द ऑफिस and MFA should not be prompted for him whenever he is logging in from these IP addresses. ठीक है, Okay. clear? यस। Clear. So whenever an authentication is happening, let's take an example of this account Ibrahim जिस पे अपन अभी MFA enable किए, तो लॉगिन के टाइम पे आईपी एड्रेस भी कैप्चर होती, क्या आईपी एड्रेस से लॉगिन करे वो सब आइडेंटिफाई होता। लेट्स गो टू द साइन इन लॉग्स एंड सी। ठीक है, अभी ये आज के लॉगिन से 9:34 PM, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ से आया, लंगर हाउस तेलंगाना, ये लोकेशन से आया। लोकेशन डिटेल्स में आपकी आईपी एड्रेस कैप्चर होती, ठीक है। ये आईपी एड्रेस से आया, ये लोकेशन तेलंगाना इंडिया, ये लोकेशन से आया लॉगिन, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस हर लॉगिन के टाइम पे कैप्चर होती। वैसे ही अगर ये आईपी एड्रेस मैच हो रही, यहाँ जो आईपी एड्रेसेस अपन लिस्ट आउट करेंगे बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिस्ट आउट किया
that is matching with this IP from where the user is logging in, then MFA will be skipped. MFA नहीं पूछेगा. ठीक है, क्लियर है? Yes. जी Yes. ओके. अब ये देखिए साइन इन लॉग में अपने को और डिटेल्स क्या क्या दिख सकते हैं. यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स क्या है, MFA रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बाय द क्लेम इन द टोकन. मतलब MFA पूछा इनको और सेटिस्फाई हुआ. ठीक है, ये पूरे डिटेल्स साइन इन लॉग, कोई भी साइन इन लॉग ट्रबल शूट करना है, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. कहाँ से लॉग इन किए, एक ब्राउजर से लॉग इन किए. ठीक है, क्या लॉग इन किए, एप्लीकेशन एजूर पोर्टल लॉग इन कर रहे थे. एवरी सिंगल डिटेल यू विल फाइंड, क्या टाइम पे लॉग इन किए. ठीक है, ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन. लोकेशन पे जाएंगे, आपको लोकेशन डिटेल्स, ये लोकेशन से ये आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ था. डिवाइस इन्फो, एज ब्राउजर से लॉगिन करे थे. मैं एज ब्राउजर यूज कर रहा था ना लॉगिन के टाइम पे. एज जी. ब्राउजर यूज कर रहे थे. विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डिवाइस है मेरा जो लैपटॉप है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड इन एज्योर साइन इन लॉग्स. साइन इन लॉग्स में हर इंफॉर्मेशन कैप्चर होती, कहाँ से लॉग इन किए, क्या डिवाइस था, ब्राउजर कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, आईपी एड्रेस कौन सा था, लोकेशन कहाँ से था, क्या एप्लीकेशन लॉग इन कर रहे थे. एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड. ये बाकी के दूसरे टैब्स है which we will be exploring, conditional access and all later on. ठीक है, so this is how you enable MFA on a user basis. per user level पे आप MFA ऐसे enable करेंगे. ठीक है, and you will manage the service settings in the split. Okay, Yes. now MFA is enabled, everything is working fine. Ibrahim is able to log in every time. ठीक है, इब्राहिम लॉग इन कर रहे हो, उनके फोन पे OTP आ रहा है every time he is logging in. Now let's say in a situation, हो सकता है ना कि मतलब इब्राहिम वांट्स टू चेंज हिज फोन नंबर. ठीक है, उन्होंने सिम बदल गए. ठीक है, सिम कार्ड चेंज कर दिए, फोन नंबर चेंज हो गया इब्राहिम का. ठीक है, और लेट्स से आज फॉर अ गिवन डे इज नॉट यूजिंग हिज फोन. ठीक है, आज मतलब आज एक दिन के लिए उनका फोन खराब हो गया या एनीथिंग, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, राइट. For a reason, for some XYZ reason, his phone number is not available for a particular day. आज एक दिन के लिए उनका फोन नंबर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, और उन्होंने अपने घर के किसी का, उनके वाइफ का या फिर उनके मम्मी का, किसी और का फोन यूज कर रहे टेम्पररीली, फॉर एक दिन के लिए उन्होंने किसी और का फोन यूज कर रहे. ठीक है, फॉर एनी XYZ रीजन. तो अभी जब 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 उनको उनके फोन नंबर का एक्सेस नहीं है, फॉर सम XYZ रीजन हिज फोन नंबर इज नॉट वर्किंग for a given day, and he want to access his applications and continue his job. ठीक है, उनका जो डेली का काम है उनको कंटिन्यू करना है. तो how that will work now, उनका फोन नंबर तो अभी अवेलेबल नहीं है, for temporary reasons his phone number is not available and he is using some other phone temporarily. For a given day or two he is using some other phone, कुछ दूसरा फोन नंबर है, कुछ किसी और का फोन यूज कर रहे हैं. ठीक है, this can happen, right, this can happen anytime, कोई भी यूजर के साथ हो सकता. जी Right. Yes. So what will happen in this situation? Now how he will be able to log in? OTP तो Se- वही फोन नंबर पे जाएगा. तो कैसा करेंगे, Security लॉग इन कैसा, questions. सिक्योरिटी क्वेश्चंस. चलो देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे. आप तो सब बोल रहे हैं. Close this browser. Switch to a different device. I'm getting a warning that your microphone is not working. Am I audible? यस Yes. Okay. ठीक है, देखेंगे क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते लॉगिन के टाइम पे अगर फोन नंबर का एक्सेस नहीं है तो. ठीक है, यू सेइंग दैट ये ऑप्शन आपको काम नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन तो है नहीं. मोर इन्फॉर्मेशन है, मोर इन्फॉर्मेशन विल टेक यू टू अ डॉक्यूमेंट.
ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी पूछेगा, विच यू कैन नॉट एंटर बिकॉज वो फोन नंबर अभी एक्सेसिबल नहीं है आपको, फॉर सम एक्स वाई जी राइट। रीजन फोन नंबर था एंड्स विथ 06, ये अभी काम नहीं कर रहा टेम्पररीली, एंड यू वांट टू एक्सेस योर एप्लीकेशंस फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज. Or let's say there is a scenario wherein your phone is accessible, ठीक है, आपका फोन नंबर काम कर रहा, लेकिन आपको आप फोन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर अ गिवन डे यू वांट टू गिव योर फोन टू योर वाइफ, एंड योर आपका वाइफ का फोन आप आज कैरी करना चाह रहे हैं ऑफिस के लिए, ठीक है, यू वांट टू एक्सचेंज योर फोन विथ योर वाइफ, ठीक है, आज एक दिन के लिए आपका फोन आपके वाइफ यूज करेंगे और आपका वाइफ का फोन आप यूज करेंगे, जस्ट फॉर अ सिनेरियो, एंड आपको फोन नंबर चेंज करना है, यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड फोन नंबर, ठीक है, तो वो कैसा करेंगे? अभी यहाँ तो आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, आप कैन यू कैन नॉट change your phone number. So the registration page is the वेबसाइट। one where you log in. Exactly. वो जो aka.ms/mfa setup था ना, जहाँ पे जाके आप mfa फोन नंबर रजिस्टर किए थे, राइट, वो जी। रजिस्ट्रेशन जाके आपको फोन नंबर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, that is how you can change your phone number. So now let me take you to this page, aka.ms/mfa setup, ठीक है, ये है MFA रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पे आप लॉग इन करके आपका फोन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, या आपका प्रिफर्ड मेथड, जैसा कि ओटीपी था, ठीक है, आपको हमेशा ओटीपी आ रहा था, एंड यू डोंट वांट टू यूज ओटीपी एनीमोर, आपका आपके इनबॉक्स फुल हो जा रहा है मैसेजेस से, ठीक है, एवरी टाइम आप जब भी लॉग इन कर रहे हैं आपको हर बार ओटीपी 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 आ रहा है, और आपको आपका इनबॉक्स फुल हो रहा है उस वजह से, ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू यू वांट टू स्विच फ्रॉम ओटीपी टू फोन कॉल, I mean you want to make some changes with your registered methods, ठीक है, कुछ भी changes करना है, you can log in, the user can himself log into this registration portal and make the changes. लेकिन Okay. रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भी लॉग इन करने के लिए एमएफए कंपलसरी है, ठीक है, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पेज, राइट, अब समझो इब्राहिम का अकाउंट रजिस्टर्ड है विथ हिज फोन नंबर, तारिक क्या करना चाह रहे हैं, उनका फोन नंबर रजिस्टर्ड फोन नंबर चेंज करके एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, a third person trying to gain access to इब्राहिम्स अकाउंट, तो उन्हें क्या कर सकते तारिक, अगर एमएफए नहीं पूछ रहा ये रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो तारिक डायरेक्टली क्या कर सकते, इब्राहिम का यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करके तारिक अपना फोन नंबर रजिस्टर कर ले सकते, इब्राहिम के अकाउंट पे अपना फोन नंबर रजिस्टर करके इजीली एक्सेस कर ले सकते, राइट, तो उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन पेज पे भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अप्लाई होती है, ये रजिस्ट्रेशन पेज पे भी लॉग इन करने के लिए एमएफए पूछता, ठीक है, जी। just to ensure that no one else is logging in and making changes to your registered methods, ठीक है, तो अभी अगर चेंजेस करना है तो पहले यहाँ पे लॉग इन करना है विद द ओल्ड फोन नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे पोर्टल पे ऑप्शन मिलेगा चेंजेस करने के लिए, so the user himself can make the changes, you don't need to contact your IT administrator every time, और IT support team को contact करने की जरूरत नहीं है, आप खुद लॉग इन कर सकते हैं, आप खुद अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं जो भी रखना चाह रहे हैं, या फिर प्रिफर्ड मेथड फोन कॉल की जगह ओटीपी रखना चाह रहे हैं, या ओटीपी की जगह फोन कॉल, या कुछ दूसरा मेथड जैसे ऑथेंटिकेटर ऐप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, यू कैन मेक योर चेंजेस, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे चेंज करना है आपको, you can click on change, you can change the phone number over here. So it will take you to the security info page, mysignins.microsoft.com security info, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर मेथड को चेंज करना चाह रहे हैं, ऐड अनदर मेथड, तो मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसा ऑथेंटिकेटर ऐप वाला ऑप्शन है, ठीक है, so you can add your preferred methods, change your phone एक number, एक बार फिर से delete, बताइए ना। जी, कौन ये सा, ये ये वेब पेज नहीं, ये वेब पेज पे कैसा है, अपने बोल फिर से बताइए। aka.ms/mfa setup, ठीक है,
अच्छा सेम वेबसाइट है, इस पे रिडायरेक्ट कर रही शायद ये। हाँ, सिक्योरिटी इन्फो पेज पे लेके आता है आपको। ठीक है समझ गया। I'll मैं put वो this यूआरएल URL in देख the के chat. कंफ्यूज हो गया मैं। जी, वो आपको रिडायरेक्ट करता aka.ms/mfa setup. This is the URL that any user can access and change his MFA details. मॉडिफाई करना है कुछ भी, ये फोन नंबर चेंज करना है, चेंज कर ले सकते। ये फोन नंबर डिलीट करके कुछ दूसरा मेथड ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट कर ले सकते हैं आप। साइन आउट करना चाह रहे हैं, लेट्स से यू हैव लॉस्ट योर डिवाइस, जैसे लैपटॉप जहाँ पे क्रेडेंशियल सेफ थे, कुछ ऐसा हो गया, एंड यू वांट टू इंश्योर दैट यू आर साइंड आउट फ्रॉम एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल आप कोई थर्ड पर्सन के लैपटॉप पे लॉग इन कर दिए थे, लॉग आउट करना भूल गए थे, ठीक है। On a given day you have signed into a third person device and you forgot to log out, आपको अब याद आया आपको कि आप log out नहीं करे थे। Maybe your session is active and that person is utilizing your session, your active session, तो आपको log out करना है हर जगह से। You can just click over here, sign out everywhere, and this will sign out all your active sessions। आपके जहां जहां भी sessions active है with this account ibrahim@razi.store, जहां जहां भी आप लॉग्ड इन है, हर जगह से लॉग आउट कर देता आपको। ठीक है, क्लियर है? डन। एनी डाउट्स? जी क्लियर। Okay, so this is the security info page which any user can access and make the preferred changes। ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। अभी और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका फोन गुम गया, ठीक है। आपका फोन गुम गया, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब आप सिक्योरिटी इन्फो पेज लॉगिन करेंगे ak.ms/mfa setup, वहां पे भी आपको पहले वेरिफिकेशन पूछेगा, MFA पूछेगा। लॉगिन करने से पहले, ये सिक्योरिटी पेज आप लॉगिन करने से पहले आपको MFA कंप्लीट करना है, राइट। अब आपका फोन गुम गया, आप MFA कंप्लीट कर ही नहीं सकते, देन यू कैन नॉट इवन लॉग इन टू द सिक्योरिटी पेज, राइट। यस अंडरस्टैंडिंग? यस जी। यस तो अब आप सिक्योरिटी इन्फो पेज एक्सेस करना मतलब आप पहले MFA कंप्लीट करना है। सक्सेसफुली MFA कंप्लीट करेंगे तब आप सिक्योरिटी इन्फो पेज एक्सेस कर पाएंगे, वहां पे चेंजेस कर सकेंगे, राइट। अब जी आपका फोन, you have lost your phone, then you cannot even access the security info page. Now what you can do in this scenario? I think we need to contact IT Exactly, you have to support. contact your IT support, and what they will do, so basically these type of issues you will be getting, right? जब आप लोग जॉब पे जॉब, I mean whenever you will be getting a job in Azure Active Directory in future, in near future, so you will be getting such complaints, right, from your customers or from your support team that he has lost your phone and he needs fix on that, right? He need your help to gain the access, right? ऐसे ऐसे काइंड ऑफ So इश्यूज आएंगे आप लोग को ट्रबल शूट करने के लिए। जी, जी इब्राहिम। तो इन ये केस में हम यूजर या जो भी यूजर है या फिर सपोर्ट टीम उसको बोल सकते हैं कि आप वो नंबर वापस रीगेन कर सकते हैं या नहीं। रीगेन कर हाँ सकते हो तो विल कीप इट एज इट, लाइक जस्ट हम एग्जैक्टली, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन निकाल दे सकते हैं, या नहीं अगर वो कोई नया नंबर लेके आना चाहे तो अपन अपडेट कर दे सकते हैं नंबर। नया नंबर लेके आना चाह रहे हैं आप, अपडेट करेंगे। अच्छा, तो ये अच्छा ठीक है, आप अपडेट करेंगे, यू बीइंग द सपोर्ट टीम, यू विल बी मेकिंग द चेंजेस ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर, राइट? यस यस यही बोल रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, तो इब्राहिम के अकाउंट पे इब्राहिम के अकाउंट पे क्या हुआ, इब्राहिम बोल रहे कि उनका फोन गुम गया, ठीक है। और ही इज मेकिंग अ कॉल टू द सपोर्ट टीम एंड आस्किंग हिम टू हेल्प हिम आउट, राइट? यस ये सिनेरियो है। अगर ठीक है, हाउ कैन यू गारंटी दैट इट इज इब्राहिम हिमसेल्फ कॉलिंग द सपोर्ट टीम? हो सकता है कि तारिक कॉल करके बोल रहे कि ये मेरा अकाउंट है ibrahim@microsoft.com, मेरा फोन गुम गया, ऑथेंटिकेट मैं लॉग इन करूंगा नहीं कर और पा पर रहा हूँ। आईडी डिटेल। हाँ, मेरे को फोन नंबर चेंज करना है बोल के तारिक अपना फोन नंबर दे के रजिस्टर करवा लेगा सपोर्ट टीम से, हो सकता, राइट? जी जी। तो तो अपन उनको ऑथेंटिकेट करना पहले कि ये वही सेम पर्सन है या नहीं। जी, वेरीफाई करना, आइडेंटिटी वेरीफाई लाइक करना। Instead of taking all that headache, what we can do is
we can allow him to register his details freshly. The next time he logs in, we can allow him Hmm. to register his phone number freshly. ये एक better option है. अपन 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 खुद से जो है फोन नंबर चेंज करना या फिर उनका एमएफए डिसेबल करना, विच इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, राइट? एमएफए एनेबल इसलिए करे Yes. थे कि सिक्योर अकाउंट सिक्योर करना, बल्कि व्हाट इफ अगर अपन डिसेबल कर दिया और वो टाइम पे अगर कोई अटैक हो गया अकाउंट पे, जी तो instead of doing that, we have a better option. Being a support person, what you can do, you will have the access to the portal, right? आप क्या कर सकते हैं, पोर्टल पे जाके जो भी यूजर कंप्लेन कर रहा, ठीक है, इब्राहिम इज कंप्लेनिंग दैट हिज फोन इज लॉस्ट एंड ही कैन नॉट लॉग इन, तो आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोफाइल पे जाना, इब्राहिम के प्रोफाइल पे जाना, यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे आपको, नीचे है ऑथेंटिकेशन मेथड्स, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे एक फोन नंबर आपको दिख रहा रजिस्टर हुआ हुआ, जी आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रिस्क, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रिगर दिस ऑप्शन. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, मैजिक बटन बोलूंगा मैं, मैजिक बटन बोलता हूँ इसको, ठीक है. रिक्वायर री रजिस्टर एमएफए, require okay. re-register multi-factor authentication. If I trigger this button, the next time Ibrahim logs in, he will be allowed to freshly register his details, his phone number, his Got other it. phone number. ये हो So गया, that ये मैं person, क्लिक कर दिया, let's say this, that person will be using his user ID and password for registering the लॉग इन, new number, right? एग्जैक्टली, डेफिनेटली वही देखेंगे अपन. अभी मैं ये ट्रिगर कर जी दिया, being an administrator, being the support person, I have triggered this button. Now when Ibrahim logs in, let's see what happens. Recently मेरे अकाउंट पे ऐसे ही हुआ था, I was blocked from MFA and जी और मैं अपनी कंपनी के सपोर्ट टीम को बोल रहा हूँ कि दिस इज द फिक्स, यू हैव टू इम्पोज दिस ऑप्शन एंड देन आई विल बी एबल टू लॉग इन. तो सपोर्ट, आईटी सपोर्ट को कांटेक्ट किया, वो लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिक्स हो रहा नहीं. देन आई हैव टू टेल देम दैट दिस इज द फिक्स दैट यू हैव टू इम्पोज. बाद में वो लोग ऑप्शन ट्रिगर करने के बाद मेरा इशू फिक्स हुआ, ठीक है. जी द नेक्स्ट टाइम इब्राहिम इज लॉगिंग इन, ही इज अलाउड टू रजिस्टर हिज डिटेल फ्रेशली. जो फोन नंबर रजिस्टर्ड था पहले वो डिलीट हो गया, फ्लश आउट हो गया, ठीक है. जो पुराने जो रजिस्टर्ड डिटेल्स थे वो पूरे क्लियर हो गए. अब फ्रेशली जी आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रहा है नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करें. यू विल से नेक्स्ट एंड इट विल टेक यू टू द registration page to freshly register. ठीक है. I want to set up a different method and then go for the phone option and then register your different phone number whichever you want to register. That's it. Got it? This is the yes magic button. This is why I call this as a magic button. इससे क्या होता है, बैक एंड में जो भी रजिस्टर्ड डिटेल्स थे यूजर के, एमएफए रजिस्टर्ड डिटेल्स थे, वो डिलीट हो जाते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पेज पे आके रिफ्रेश करूंगा, I think I should not see that phone number anymore. This phone number can be used. No. यहाँ पे एक वार्निंग आ गई. दिस फोन नंबर कैन बी यूज्ड एज अ यूजर नेम टू साइन इन. ए टेक्स्ट मैसेज विल बी सेंड फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग साइन इन. यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था.
So I have to जी sign in, do the verification with this phone number again, similar to what I am doing over here, right? यहाँ पे मेरे को एक OTP आएगा, verify करना है. I have received the OTP 406. अच्छा यहाँ पे ऐप पासवर्ड भी बोल रहा, but I will skip that option. I will directly close this. Okay, I will get the OTP next time and I will be able to log in successfully. Okay, this is how you can gain the access when you lose your access to your phone. Lost your device. Exactly. ठीक है, clear है भाई? जी Yes. There are further options as well. जैसा ये एक magic button था, वैसे और भी कुछ ऐसे options है, जैसा कि revoke MFA sessions and all, reset your password and everything. We will be exploring one by one. But yeah, we will be going a bit slow on this because it's a security feature, and I would request you all to please practice. ठीक है, इसके लिए कुछ setup की जरूरत नहीं है आपको. Just create a test user. आप directly cloud में भी create कर सकते हैं if you don't have an on-prem environment. Create a user here itself. ठीक है, और फिर practice करिए, वो user account पे MFA enable करिए, practice करिए. ठीक है, जी you don't have to have any kind of lab setup or anything. It's just on the Azure portal itself. Practice करिए तभी याद रहेगा आपको, नहीं तो भूल जाते. ये जो scenarios है, these are interview question. What you will do if a user has lost his access to MFA device? How you will troubleshoot his situation? ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. MFA जी डिवाइस गुम गया, MFA कंप्लीट नहीं कर सक रहा यूजर, हाउ यू विल हेल्प हिम आउट. ठीक है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा आपको. जी ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर.